Yeah, Jai my future brothers officers. I'm back with another small video. Okay, this video is nothing about some tips and tricks that help you to clear your OIR and PPDT of Indian Coast Guard, right? Or maybe Army, Navy, Air Force, whatever is there, right? For especially for Indian Coast Guard, right? So your guys like PSB starting from 6th of June, and I think it will coming like happening in multiple batches. So till maybe end of this month, or maybe it can go to July also, first week of July. So I want to say best of luck or all the best to everyone, all the aspirants who are planning to attack this monster, okay, with their full preparation. And I hope you have taken the channel join as a member, so at least you can score good marks in OIR, so it will not hamper your selection in the PPDT, right? So guys, so that's all. Some tricks I want to tell you. Okay, once you're done with the document verification, go there, keep yourself cool and calm. If you want to have some coffee or tea, if you're in a habit of that, then you can have. Okay, and just keep your mind more active. Okay, because things will go very very fast in exam, especially in written OIR PPDT of it, right? OIR part. So the first thing is that just see the question very properly. It is not four option. There will be some six option with A, B, C, D, E, F. ओके सो आपको लगेगा कि ठीक है ऑप्शन तो डी दिखा रहा है वहां पे लास्ट में, सो यू विल मार्क इट एफ हियर, यू नॉट मार्क डी हियर, सो यू टू वेरी केयरफुल अबाउट इट. ठीक है. और जैसे कि सेट 7 में जो अरे वाले क्वेश्चंस आते हैं गाइस, राइट, तो हमारे वाले क्वेश्चंस विल बी देयर. सो उसमें आई थिंक सेकंड थर्ड समटाइम एट्थ आल्सो किसी में टाइम बहुत कम है. जैसे मान लो हर किसी में वो 4 5 6 सेकंड 7 सेकंड मान लो 7 सेकंड्स दे रहे हैं मिनिमम, राइट. तो फिर उसमें एक क्वेश्चन बीच में ऐसा आएगा जिसमें 3 to 4 सेकंड देंगे. सो बी केयरफुल अबाउट दैट. अगर आपने एक गोला भी मिस कर दिया ना, आपका पूरा सेट खराब हो जाएगा. एंड आई एम प्रीटी श्योर नॉट गोना क्लियर योर OIR, स्पेशली with if you miss any question in set 20 is very very important. Try to mark it 20 out of 20. उसमें कोई लिवरेज नहीं लेना है आपको, पहली चीज तो ये. और वहां पे बच्चे शायद आपको बोलेंगे ओके इसका आंसर मैंने साउंड आएगी बैकग्राउंड से, बट बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर, लाइक अपने ऊपर भरोसा रखो, दूसरे पे नहीं. वो क्या बोल रहा है उससे तो मतलब नहीं है, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो. ठीक है, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, आई कम विद अ गुड प्रॉपर थिंग. ओके, एंड द नेक्स्ट पार्ट इज द ब्लड इमेज इन ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस. ठीक है, ब्लड रिलेशन क्वेश्चंस में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है दैट इंडिया बिक्स करके एक वेबसाइट है, उस पर जाके आप बेसिक प्रैक्टिस करो. ठीक है, उस पर एक सेकेंड या इंडिया बिक्स के चैनल पे जाके बेसिक प्रैक्टिस करो. ठीक है, वहां पे बेसिक प्रैक्टिस करने के बाद वहां 4-5 सेट दिए होंगे, वो सेट सारे के सारे लगा लेना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, उसको लगाने के बाद 4-5 लगाने के बाद 4-5 बार लगाने के बाद फिर आप मेरे चैनल की जो मेंबरशिप उस वाले क्वेश्चंस पे आना, वो आपको इजी लगेंगे रिलेटिवली. ठीक है, वो काफी इंपॉर्टेंट. मेरे रेवेन्यू रोटेशन के मैंने 10 क्वेश्चंस ऑलरेडी डाल रखे हैं. दैट्स द बेस्ट नो हैव वन प्रोवाइडिंग दोस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, राइट. एंड द नेक्स्ट पार्ट इज दैट पीपीडीटी में जैसे आप स्टोरी लिख लो, डोंट वेस्ट योर टाइम चिट चैटिंग हियर एंड देयर. इमीडिएटली अपने एडमिट कार्ड के पीछे कहीं भी या कोई भी पेपर साथ में रखो, इमीडिएटली वहां से रूम से निकलो, लिखना अपनी स्टोरी फटाफट लिख लो, जितनी भी आपको जैसी भी याद होती है उसको रिवाइज इट कंटिन्यूसली. हो सकता है आपका बैच सेकंड थर्ड फोर्थ तो आपको काफी टाइम मिल जाएगा. सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और पीपीटी के टाइम में देखना कि हाउ द ग्रुप इज परफॉर्मिंग. ठीक है, ग्रुप ठीक से परफॉर्म, ज्यादा रिपीटर्स का है, ज्यादा एग्रेसिव हो रहा है, देन यू हैव टू यूज योर एग्रेसिव फेस और स्पार्ट, द एग्रेसिव फील विच यू हैव, राइट. एंड द सेकेंडरी, अगर आपको लगता है कि चलो ठीक है ग्रुप कूल एंड काम है तो ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है, कम टू द कॉमन ग्रुप स्टोरी एज सून एज पॉसिबल. और एक और चीज वेरी इंपॉर्टेंट, लोग बोलते हैं सर फिश मार्केट में कुछ समझ में ही नहीं आया तो हम क्या करें, अपनी खुद की स्टोरी बोल दें. नहीं, हैव सम वन थिंग बैक ऑफ योर माइंड कि ठीक है, लिसन टू ईच एंड एवरीबॉडीज नरेशन वेरी केयरफुली, किस बंदे ने क्या क्या स्टोरी बोली. अगर मान लो फिश मार्केट में कुछ भी बात पल्ले नहीं पड़ती, बट एटलीस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द नरेशन ऑफ अदर कैंडिडेट्स यू कैन कम विद अ कॉमन ग्रुप स्टोरी. इतना आप पे कैलिबर होना चाहिए और आप कर भी लोगे, बड़ी बात नहीं है, राइट. So that's all guys. So all the best for your PSB. Okay, and anyone who cleared a PSB, please do approach me. I would love to take your interview, so at least other aspirants will get some benefit out of it. Okay, and any question, anything you want to say, just you can comment down in the description. You can comment down under this video. Okay, our PPT session are still going on. If you're interested, you can just WhatsApp me on this particular number which already provided. You can join our Telegram group and we'll start. Okay, don't worry about fees or money. You people are more concerned about this kind of shit. I mean, we are refunding your fees
if you are the best in the batch, so no loss, no gain. Okay, so best of luck, guys. See you on the other side of your journey. Jai Hind.